Start, sir. I extend a hearty welcome to all of this is the call in between the two Thursdays that we have on alternate Thursday to this call today. So on behalf of True Digital Venture X, I welcome all of you to this pitch day call. I am Major General Setia, Sena Medal wishes, serving the army for 40 years. I'll be the host and the moderator for today's pitch day call. The whole idea behind our startup is to be the enabling force for the startups to grow into great businesses. They are all great ideas. Besides, we have a great InvestX panel today. I would like to thank the InvestX panel. The feedback from the last session's founders was very, very positive. So before I go to introduce the InvestX panel, I have a few announcements that we have uh, done some improvements in our uh, startup or on our format. First, we have created dedicated teams to engage the investors on behalf of the startups. This will make the engagement with the investors more meaningful and easy. Second, on the website front, we have made it simpler by putting the startups categorizing. Earlier, they were categorized, in the various sectors that they were. Now we also categorize them in the various stages that they are. The early that they are 450 startups. It's an ever, if you look at it, it's an exponentially increasing number of startups that are joining our platform now. And in the last, say, about a month, we have had almost 50 startups joining us. So, also, I would like to say that, this feedback from the last session's founders that though they were grilled a lot by the InvestX panel, they went back very, very happy. They said, what a session we've had with this InvestX panel. I also wish to convey our gratitude to all the investors who've been joining us on all the calls and have continued to engage with the startups. The deliberations have made good headway with the startups, and we're doing well on that front. To introduce the InvestX panel, we have Tarun Kumar, who, like me, is a Army veteran. He is presently mentoring 3 startups in diverse sectors. He is an active mentor of Digital Futuristic Network and Sebo, an influencer on the Entrepreneurs of India network. He is an expert at brainstorming with the founders. Mr. Dukbandhu Rath is the next on the Invest X panel. He needs no introduction. He is a renowned figure. He's the former, he's the former SBI and the former managing director of Gujarat Venture. He's been kind enough to be there for all our pitch day calls. We also have another eminent personality in Dr. Vijay Kumar Salvia, who's based out of Indore, who's the presidential advisor at the International R&D Creativity Organization of the USA. He's also the global brand ambassador of Sustainable Development Goals for the United Nations Organization. On behalf of True Digital Startup, I welcome all members of the InvestX panel. Would any one of you like to say something? I think Dr. Vijay wanted to say something. Yeah, Dr. Vijay, I was told by Sanjeev that you were wanting to say something before we start the calls. Yeah. So, good evening, good afternoon, and good morning to all of you with respect to international standards. I welcome all of you. We, the Research Innovation Startup University, International R&D Creative Organization, that is Research and Development Creative Organization USA India, is working for the startups and also to give you the base that is from the 0 to 100. And with 360-degree approach, we apply for the entrepreneurship. So, whatever the idea you have to work according to this 360-degree. And in 360-degree, you have to calculate everything. However, we will see your presentations, and after it, you have to make it for the convenient, for the sustainable. So whatever the startups we want to use, that should be the sustainable, and sustainable with respect to the
we can say the mob. So as this not as we have so much time, so I only think only want to say that whatever you have the idea, whatever you have you want to do, you can register through an ISSN general, that is a copyright, and we have all such type of facilities. We university has the course. It is not a traditional courses, whatever the courses. We only working for the startups and whatever the idea research. That is at present the PM Modi says Jai Anusandhan, Jai Jawan, Jai Jawan, Jai Kisan, and also that is Jai Anusandhan. So for that we are working, and every year 1600 startups and 1600 students or participants we guide. So international research and development key integration USA India has so many we can say the associations of industries and all things, and you will get a better collaboration with Sanjeev sir and Dr. Digvijay Singh and whatever the experts here, Tarun sir. So you whatever we advise you, you follow strictly according whatever we are saying or whatever we are questioning. So thank you very much, and break your soft zone. Be only always in hard zone. Thank you very much. Thank you, Dr. Vijay. Thank you. Okay, let me introduce the two founders and the startups. We have two startups doing their pitch deck presentations today. First is Mr. Vijay Shiragupi. He is the Indian rep of TCT India. They are propagating the use of non-polluting and environment-friendly materials for construction industry. And the second startup is J Travels. The founder is Mr. Akash Jaiswal. They are addressing the issue of mobility solutions in non-metros and rural areas. So, thank you, Sanju, though for the running out that happened today. Yes, I'm glad that there are three Vijays today, including me. One is Mr. Digvijay, and one is Mr. Vijay Salvia. Am I audible? Yes, perfectly all right. Okay. Now to start with, we are talking of the global phenomena of the worst kind that is happening in this world about pollution. So let me not elaborate on that. So we have come up with a solution which is the solution for pollution with future materials. And so what is the problem? Problem is polluting materials destroying our planet, which everybody knows, and climate change. Of course, we are experiencing it currently. The solution is to reduce and replace with alternative material, natural material, low carbon material. And we want it to be a sustainable solution, so we call it as a 4P solution, which includes people, planet, pollution, and yet make profit. Then only it will succeed. Yeah. So the current agreement, I said already, is to save our planet, and we have to come up with environmental friendly, sustainable solutions. So if you are in a position to reduce, replace globally steel, concrete, aluminum, fossils, oil and coal, wood, plus with materials, economical, low carbon, natural material and better material. And we don't have time to now, but we have to realize that we don't have an option, and there is we have to time to commercialize. So what exactly is the solution that we are propagating, which is called as carbon fiber plus stone? So in short, we call it CFS. It's a new composite material, or it's already done in Germany, and it's 80% made by nature. So where we capture the carbon to make it a material that is applicable in construction, infrastructure, transportation, and you name it, those kind of sectors. So what we are saying, the carbon fiber stone is a new material that has got compressive strength of construction steel, tensile strength and rigidity of carbon fiber, and elasticity of aluminum. And the structures are 2x lighter than steel and at the same weight as aluminum. Okay, now carbon fiber, which we call it as a material of the 21st century, has been patented. It's a proven German technology. It's patents in US, China, India, European Union, with over 12 years of R&D and about 8 million spent across by the university, by the grants of German and our own companies there. And the sale of products is going on. It's being made handmade, so you don't have. It's a very high cost material. Now, when I call stone, now there are some myths about it.
that granite is expensive. How will it replace steel and the concrete and the plastering and all that? So we say stone is nature cured. It's available across the world. It's available in abundance, and it can be built locally, used locally, instead of all this polluting supply chain of iron ore, limestone, bauxite, coal. Carbon fiber, yes, it is not new, but it's currently very expensive. But in future, yes, we produce using algae, and we have a patent for that also. But I'm not going to talk about that right now. And we also have the impression that stone is brittle. Okay, we can prove that. So let me start with photos, which is more louder than words. Now this is a I-beam, double I-beam, which is about 6.4 meters in length with one bed, and it is 50% lighter than steel. And steel is, the performance is more than 50% because it never rusts. Okay. These are all, I think this is a rusting steel beam that you have, and you know when it's going to rust and bite dust. And we have the CFS beam right side, which is 50% less in weight and more performance. Okay, now when I talk about this, if you see this is a granite fiber stone wall where we don't need in future steel, cement, bricks, sand, plastering, painting, and wood. Most of it, at least 60-70%, is covered by this, and it's 4 times lesser weight, so hence lesser structural designs. It's able to carry about 25 tons, about 2 to 3 stories can be built across upon that, and its quality, durable, can be recycled, waterproof, no maintenance, saves time, money, and more important today with labor shortage and sand shortage and other things, a big amount of pain it saves. Okay, and you can see that this material, when we have a stone with carbon fiber, it is flexible. Hence, it is also earthquake proof material. Okay. Stone can be seen to be flexible, which is unimaginable, like a magician's this. And you see the rod here, on which this gentleman is sitting, and it becomes again back to shape after the bend if it goes through a bend. Now the solar and everything is in such a big way, but the steel and other metal being used can be replaced by this frame of our carbon fiber stone. You can see glass, stone, carbon fiber, and the thin film. And also we can use our carbon fiber stone as a the supporting structure of the photovoltaic solar. Now, this is something that measurement lenses for steel industries is currently being sold. Of course, as I said, since it is not in an economical way of producing in large volumes, it is expensive, but it is being sold and quite appreciated also in the steel industry. Now, my friend Siva Chandupati, who joined me from Germany on this presentation, is the founder and of this technology based on our Indian Vedic sciences, sunflower propeller, and that is a compact wheel for air and water for both power and thrust. And we are working with him to make these blades from carbon fiber stone, which he displayed in the last 2 months or so in IIT Mumbai, and then before that in Paris. So you can see this. This is a carbon fiber stone made blade. A bathroom stone in combination with glass, 12 mm. These are all something that we say want to show that as a proof of concept. Now, radiators can be built with our product, and also the railway sleepers, which has been already tested to European Union Bahn, that is a German railway standards, which stands about more than 3 times of over the SWR. And you can see here in Marriott Hotel is being used in aeroplanes. And one more interesting is in hotels application using directly the stone surface for the heating. Yeah, and these are pillars and beams from carbon fiber stone.
um, being made. And see, this was before what it was a structure, and now after we made this an experimental building after CFS, the flooring and the pillars and the beams. Okay. Now this is another new material in the market, especially like on the subject of current global energy crisis for winter in the entire European and whatever cold countries. Electrical watt heating with the long wave radiation and on-demand switching. It's 1 mm thin black granite, and it's a E-conductive carbon layer. So it is being done and being used by my founder friend Mr. Kolyak, who could not or is not present today at this presentation. With a very low electricity consumption, I have got more details on this, and it's very cost effective. And this has been one more thing that will replace plastics in a big way is non-breaking flexible back cover of cell phones, 1 mm pre-stressed granite. Now we have sources in India, sun, sea, stone. Why sea is required is the next subject, but yes, that also works at a later stage for the carbon fiber production. And stone is cheap and in plenty. Anything else comes for free. Of course, we do produce a lot of carbon dioxide, which is free of cost. And land, yes, we have across the country. Raw material, yes, across the country. Labor, yes, skilled, semi-skilled, and at economical cost compared to the American or European standards of labor wages. Subsidies, Indian government, yes. Business model, it can be business government, business to customer, business to business, and our team is ready. Okay, now just to give you an idea about the global market for CFS briefly, construction sector, as what I gathered from Google Mate, is about $13 trillion in a year. Housing sector itself is 4 trillion, and infrastructure is about 3 trillion. So I'm just taking, if you take 5%, it will be 1 trillion over a period of market, because we are going to address the Indian market first. From the sources that I have, it's going to be about $600 billion, and with a compounded annual growth rate of 6%. Some place 4, talking about 390. So we are taking even 0.01% of the market share. It is 50 millions. So for my basic calculations, I've taken it to be 10 million for first year operations. Not even 10 million, maybe 7 to 8 million of US dollars. And square foot construction in India is about 43 million square foot per year. So I am assuming only about 5 lakh square foot or 500,000 square foot for my first year operations. And the construction cost per square foot in India is about 1,200 to 1,700 per square feet. I am assuming at a rate of moderate rate of 1,500, but with a better quality material. And so the financial that we have projected, in fact, compared to my last presentation, all that we have reduced the investment amount percent, because we thought we will not go into the supply or procuring granite, cutting it, and all that. We'll just rather buy it outside. Investment only assembly plant is about 65 crores. We expect the equity about almost 50% of it. Debt also in terms of other ways. And you can see the EBITDA that we are going to generate. Investments, of course, this comes to financials. We can always discuss it at a later stage if somebody is really interested, because I don't think you will get this way. And what is the competition now? We have no competition on commercial scale, and we have identified all the resources or the people that are required uh, to be there. We can do it in less than 12 to 18 months.
focus on some sector because this carbon fiber stone is applicable across so many sectors, but the housing infrastructure is so huge and it's easier to kickstart. Other sectors, railway, shipping, aviation, it takes time to market because testing, certifications, other high value components in consonance with the DRDO or ISRO, or we are focusing on the market of housing. And why housing? Because 60-70% of the house. Now we see we are available everywhere. We have the carbon fiber walls, flooring, roof cladding, dining table, doors, cupboards, uh, renewable energy, rooftop solar, windmill, heaters. In a nutshell, since I'm addressing a larger market with a larger applicable products, I'm looking at housing as a area to start with. So to start that, to who we are tech. And Mr. Kolyakusa, who's unfortunately last minute could not be, and the holder of 83 plus patients for worldwide. And our company was a part of a green carbon project with the University of Munich, with the R&D for Airbus, Carbon, Mercedes, AHP, and we have received so far, a mix of bouquet of almost 8-9 millions of euros on clean climate technologies. And we have formed, me and Kolyakus have formed a company called Technocarbon Fiber Stone Technologies India Private Limited. Long name to get, but that was the Ministry of Corporations, Corporate Affairs had to give me. And we already formed it for this purpose. This is our R&D center and the factory that is a small scale in Germany near Munich uh, factory. This is a photo which is taken. This is the granite and carbon fiber. Mr. Kolyakusa, of course, he's, can't look at him right now. His back is to you. And this was during interview early morning where I was also project. And so the mixing of these two, carbon fiber plus granite as a stone, is what we call as carbon fiber stone, the new alternative material that we are propagating. You can see the bending tests and all have been done. There are many eh, illustrations that I can present. Positive time is one thing, and the other thing is so what we estimate is that we have estimated about 65 crores, that is approximately euro 7 to 8 million in India, to set up a 5 lakh square feet. And we seek a euro, our ask is euro to 4 to 5 million equity investment, and balance amount we will discuss with the investor who is interested to go by the debt or other routes of via gap funding, government subsidies, secure deposits from so many other people. And this project being, it can be done across the globe in many countries. We can save our planet, yet make a profit, a valuable material, and we can expand globally as time goes by. And of course, we don't have the funds, so we can only offer equity. Whatever percentage the investors are interested, we will discuss along with them the company structure, sharing pattern, and the first right of proposal. We'll all discuss with the interested investor and other investors. My team in India, this is Germany, will set up this facility, run it, and handle the company to reach its goals. So this is the team that we currently have. There are many more people involved. Uh, Mr. Kolya Kuse, he is a director in the company, and we have this final legal and corporate office. Technical team, of course, will be coming from Germany, Italy, and will be some of them will be trained in India. This is what I mean that the future of a world for people, planet, pollution, and profit. Carbon fiber stone is one big answer against everybody running around the. But this is one thing which will help us reduce the use of the polluting materials in a big way over a period of time.
Of course, it will disrupt the market, but yes, that's our answer to it. And thank you. We have seen COVID-19 is locked up, shut. Climate is now could be knockout dead. We are running out of time. Me, Sanju, Digvijay Vijay everybody were in the same boat. Don't have any option. And then play the music using this the sound system that we can showing you. And that's what I present. I'm open for questions. Thank you. I have So you have no production facility in India as yet. No, no, no. You have to establish the production facility. That's the project is all about. It's a basically And- greenfield. We thought it to be a greenfield, but now we are thinking of making a mixed one because we have granite stone available across India, and there's no point in cutting it and transporting. We can use it locally, and we are going to make it an assembly plant where we use the technology to fuse the carbon fiber with the stone, and assemble it to various sizes and what is required by the construction industry. No, I can introduce you to someone in the who's looking after the infrastructure development of the complete defense forces and the DRDO. But the issue is that is there a pilot project here? They will ask because they need a lot of certification, like you said. They will ask you whether your material is certified, tested. You have a pilot project with imported material here. That's also not No, done. not in India. We have certification in the European Union, especially related to railway sleepers. We have done these testings. As I told you, the railway sleepers have got over 3 million, 3 times more than the safe working load as is practiced using concrete sleepers. We already have the certifications, and certain tests are going on. And we got many other certifications that we can reveal. And of course, I don't want to say that, but ultimately, German standards are also quite robust in terms of testing and certifications compared to many other countries. Thank you. still Digvijay sir. You can take it to at least introduce him to various people in the defense. Yeah, Maybe I can do that. I can take you to the engineer in chief of the defense forces who looks after the complete infrastructure development. I can introduce but he'll also ask you. He'll ask you all these questions that whether you have a pilot project ongoing, how much time. This is just a greenfield thing. You will take how much time for this to be effective in India. That is the whole issue. Suppose you get measurement instrumentation for big steel companies in, you name it, China, India, US, Germany, everywhere. Yeah. As I said, Tukpandu sir, of course, we don't need to reinvent the wheel when it's already, we can present it and we can showcase it. You can visit Mr. Kohli's factory near Munich and see for itself, the products, the material, the different products, the testing certificates, everything. fantastic. Thank you. Yeah, Vijay. Thank you so much. we can replace steel at half the weight. We can make bridges, replace concrete, steel reinforced concrete. We are also going into the building sector very soon with a German manufacturer for concrete parts stabilized by steel. We will stabilize that by our CFS materials in the future. The carbon fiber is much stronger in tensile strength than steel, and the stone has about the specific weight of aluminum. So we can build faster, cheaper, more stable, and lighter. so. Mr. Kole, there was a question before you joined. Let's say if 1500 rupees is the cost of building in India, which is a median cost of construction in the housing sector, then 1500 rupees is how many US dollars? It is around, if you divide it by 75, it will be around $20, right?
Yeah, absolutely. The So per square foot. Per yeah, square foot. so around $20 is the per square feet cost of building material used in India. So if we were to construct or use your material, whatever is possible, bathroom and everything, what do you think will be your cost compared to the $20 if you were to produce in India and supply to the housing sector? At the moment, we have only small factories, and we do material production by hand. So even doing this, in many cases, we are competitive. Large scale production may become very cheap, very much cheaper. Since we utilize only half of the energy, I certainly believe that this is a major argument to convince everybody that our cost may be even cheaper than existing materials in the future. All right, Mr. Tarun, you have a question? Yes, Sanjeev, you uh, upstaged it by asking him the same question Okay. because at the end of the day, Mr. Kole and Mr. Vijay, this is a very competitive sector in India and probably across the globe where you're operating in. Yes, So, we know that. yeah, so the point is, whenever we are asking for any funding, or probably even if we want to have a relevance in this particular sector, the first thing is the product market fit. In your case, the sustainability aspect, the planet aspect, uh, the effect on uh, future generations, all taken care of. But people are living in the present, the fifth P. And in the fifth P, the most important thing is that how it is going to help me in reducing my cost. I understand what you said that right now you are using hand machines and probably it is manpower intensive, so your costs are very different and they would evolve over a period of time when you have large factories in place. But can you Yeah, give but us a then the answer is at the moment we cannot help you because the markets need to be built and the products need to be developed. So there needs to be made some investment first. We cannot solve everything at absolutely yes? with a click. I take that. I take Okay? that. That's not a problem. So the only thing that we can actually showcase is that we can build much better and much cheaper and lighter in the future, and this needs to be developed. And if India is, for example, not in a position to develop things, you simply need to wait until we have done all the developments in Germany. But I don't think that the world has time to wait for this. So I absolutely would insist that you would think about maybe low-hanging fruits products in India that I am not aware of. I don't know your needs well enough to start with, to just showcase that something can be done, and then this prototype of showcase can eventually stimulate more development. It's also up to you to decide. I cannot solve every problem today. So I think what he's suggesting Vijay to do some more homework, connect his his idea with the Indian needs, and then tell us in the housing sector or in the military operations, etc. Where is it that his product will fit, and this is the cost advantage, at least not cost advantage in the beginning, how sustainable the environment becomes, because sustainability is one of the things that Mr. Modi has said that we need to work. Zero Yeah, emission. but you need to invest in sustainability and do your homework also yourself together with us. Not on finger point to us. Do your homework. This is not No, the way to do it. I meant Vijay is in India because I No, am no. I am more of Sanjay, running I this. have done all the majority of the homework. Of I course, one something second, more. Vijay. I run the organization, so I will not be able to devote time to study materials because there are energy. People are looking for different sectors and all that. So we already have spent 1 hour. We have one more startup actually. So do you guys are in equilibrium right now? Everybody has got some sense of what we presented today, or if you have some
last minute 1 or 2 questions, we can ask that, and then we'll move on to the next presenter for today. I think Sanjeev, we've had a long session. The other founders also waiting. Is there any important question we can shoot at Vijay? I'm ready to take questions. Or to end it, we have done our best. Me and Kolya, we've been associated since 2007 in developing this. All we need to do now is to produce and showcase it. And it has to be strategic investors who are into this area who can look at it. I'm not saying that they should come and spend $10 million, maybe $500,000, maybe 100,000 to go and see and feel and do it. It's up to the VCs. I think we can't do anything more. As I said, we don't have all the fruits, low hanging fruits in India. Find it difficult to find and car for traveling and Uber Ola at this market. मतलब आदमी को नॉन मेट्रो सिटी और विलेज में ओला उबर जैसी ट्रेवलिंग कार और सर्विस नहीं मिल पाती. सेकंड प्रॉब्लम जो है, people find it difficult to find they want afforded price. मतलब सर जो शादी विवाह के लिए जो कपल होते हैं उनको अब शादी विवाह करा सेम मॉडल गाड़ी के लिए जो गाड़ी अफोर्ड मतलब बुकिंग करते हैं उसको पता है. मोस्ट सिटी बहुत से लोग नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं. आकाश अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज. वीडियो ऑफ कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो कीजिए प्लीज. आकाश अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए. आकाश, we are not able to hear you. आकाश, please थाम. आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी. बहुत से लोग हैं वो लोन और जी सर आवाज नहीं आ रही है. आप सिर्फ हिंदी में बोलते जाइए, हम समझते जाएंगे. अभी आ रहा है सर. किंग लोन एक्चुअली दी कार एंड अ बिगिंग लायबिलिटी फॉर देम. और वो कार तो लोन पे ले लेते हैं पर वो उसे चुका नहीं पाते हैं और वो अपनी गाड़ी खो देते हैं. द बिगनिंग प्रॉब्लम overall 90% of the surveyed view had negative segment for ride cancellation toward both Uber and Ola. मतलब एक सर्वे में पता चला है कि उबर और ओला के 90% जो है राइड वो कैंसिल हो जाते हैं. राइड कैंसिलेशन वो 7.7 का रेटिंग है. मोबाइल ऐप एक्सपेरिमेंट. सर नेक्स्ट स्लाइड. संजीव सर, राइट कैंसिलेशन 7.7% रेटिंग है. 7.7 रेटिंग है. मोबाइल ऐप एक्सपेंस जो मोबाइल ऐप का प्रॉब्लम होता है वो 5.7% है. कस्टमर केयर मतलब काफी ऐसे हैं कि रीजन होते हैं जो कस्टमर केयर कॉल करते हैं पर उनका कॉल नहीं लगता. उसका जो रेटिंग है 4% है. सर्च प्राइसिंग मतलब जो प्राइस होता है वो उनको सही रेट पे नहीं मिल पाता. उसका जो रेटिंग है 3.3 है. बुकिंग का जो प्रॉब्लम होता है 2.22 है. कस्टमर आर फ्रस्ट्रेटेड बाय राइडिंग कैंसिलेशन एंड स्ट्रेट प्राइस. जो कस्टमर है वो सही मतलब राइड जो कैंसिल मतलब जो ड्राइवर लोग राइड कैंसिल कर देते हैं और जो सही रेट मतलब जो रेट दिखता है उस रेट पे मिलता नहीं. उससे वो कस्टमर जो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड. Solution on the demand marketplace. The connected people wanting to travel with driver looking for work at the click a button. A fast and different process. A diffuse and on a demand marketplace. एक ऐसा मार्केट में हम अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे इस सर्विस का बहुत डिमांड है.
विथ ड्राइवर लुकिंग फॉर वर्क इन क्लिक के बटन, मतलब ड्राइव जो कस्टमर है एक ही बुकिंग पे ड्राइवर का वो सर्विस पा जाएगा। कहाँ से आप सिर्फ ए फास्ट हिंदी में बोल रहे हो, इसको डिफरेंट पढ़ो मत प्रोसेस, स्लाइड को। ए रिड्यूस हेड फिलिंग कार्ड प्रोसेस। ओके सर। Vision, we want to give people in village the same comfort the people cities experiment with the travel। जो हमारी कंपनी का विजन है कि विलेज और नॉन मेट्रो सिटी में अपने ये सर्विस को ट्रेवलिंग को स्टार्ट करना है। और मिशन वी वांट टू डिफाइन दी वे ऑफ द नॉन मेट्रो सिटीज एंड विलेज। सर स्लाइड नंबर 5। कंपनी का विजन है कि हमें अपनी सर्विस जो है जो बड़े शहर में है वो हमें छोटे छोटे शहर और गांवों में भी देना है। जो टू डिफाइन दी वे ऑफ द ट्रेवल इन नॉन मेट्रो सिटी एंड विलेज। और विलेज में अपनी सर्विस। सर नेक्स्ट वैल्यू प्रोपोजिशन। सीनियर हमारा जो कस्टमर जो हमारे जो यूज करने वाले होंगे सीनियर सिटीजन फ्रेंडली, और जो सीनियर होते हैं मतलब ज्यादा एज के होते हैं वो लोग हमारा यूज करते हैं। सेफ ऑफ वुमन, जो औरतें होंगी वो सेफ रहेंगी। नो हिडन चार्ज, मतलब अदर कंपनी की तरह ओला उबर की तरह हमारा कोई हिडन चार्ज नहीं होगा। ड्राइवर आप प्रोफेशनल, जो हमारे ड्राइवर होंगे वो सभी प्रोफेशनल होंगे। ऑलवेज ऑन टाइम, जो हमारा सर्विस होगा वो फिक्स टाइम होगा, मतलब वो अपने समय में आपके पास आ जाएगा। दो टाइम उतने समय में आपके पास आ जाएगा। ड्राइवर डोंट कैंसल दिस राइड, ड्राइवर जो है इस राइड को कैंसिल नहीं कर सकता। इसमें ऐसा फीचर्स होगा ड्राइवर राइड कैंसिल ही नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो वो जो नोटिफिकेशन है वो ड्राइवर के पास जाएगा प्लस गाड़ी के ओनर के भी पास जाएगा। नेक्स्ट सर। आवर प्रोडक्ट वन क्लिक बुकिंग पिकअप विथिन 5 से 10 मिनट, मतलब एक ही नॉर्मल क्लिक बुकिंग पे हमारा जो एकदम फीचर्स होगा वो 5 से 10 मिनट में आपको पिकअप कर लेगा हमारा कैब। क्वालिटी कंट्रोल फीचर ऑन ड्राइवर इज टू इंश्योर लेस राइड कैंसिलेशन गिविंग स्मूथ कस्टमर एक्सपेरिमेंट। मतलब जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल फीचर्स होगा, अगर ड्राइवर आपके साथ कुछ भी करता है मतलब राइड कैंसिल करता है, उसके लिए आप वहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं। आप कस्टमर केयर को बता सकते हैं। इससे हम आप आगे जो है इस पे हम मतलब जो भी होगा उसमें हम एक्शन ले सकते हैं। रीपिकअप फीचर्स आप कस्टमर मतलब जिसमें जो है सबसे मेन ये है कि रीपिकअप मतलब आपको बिना बुक दोबारा बुक किए आपको रीपिकअप आपको उसी एड्रेस पे हो जाएगा। ग्रेट यूआई यूएक्स फीचर्स भी रहेगा सर जो ऑटोमेटिक होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो मार्केट साइज है ट्रेवल ट्रांसपोर्ट कैब का टाइम टोटल एड्रेस मार्केट है $264 बिलियन। वी एम टू कैप्चर 10% मार्केट प्लेस शेयर इन कमिंग इन 5 ईयर, मतलब हमारे पास जो कंपनी का है 10% मार्केट मतलब शेयर करेंगे इन 5 साल में। जो टीएक्सएम सर्विस मार्केट वो 90 बिलियन Sanjeev, you mute please. 20 to 2000 during FY 2000 to FY 2025। नेक्स्ट सर।
next slide, sir. Sanjeev. Competitive advantage. The company in just drop the customer of the drop location. कस्टमर को जो कंपनी है जहाँ से पिकअप करेगा उसको वहाँ पे ले जाके लोग कमिंग मतलब आपको वापस आने के लिए फिर कैब में आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों रहेगा ऑप्शन. समथिंग फाइंडिंग कैब लोकेशन बिकम डिफिकल्ट. मतलब हमें नए जगह पे जो कैब बुकिंग होता है हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है. वी टेक केयर इन प्रोसेस. मतलब ये आवर टी प्लेटफॉर्म हैज re-pickup option where we pick up customer from where they were left. The facility also available in intercity. जो कंपनी मतलब इंटरसिटी में जो भी है इस मतलब नॉन मेट्रो सिटी में और मतलब विलेज सिटी में अभी ये सर्विस है. We people who are looking to hire a car, their marriage will provide car as per their requirements, consist performance, like model and color. मतलब arrange charge a very expensive rate for this car due high need and so many people cannot afford. Our price remains same round the year. मतलब जो शादी के लिए जो कपल होते हैं वो गाड़ी बुक करते हैं लेकिन उनको जो रेट में चाहिए जो होते हैं वो एजेंट होते हैं वो हाई रेट बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं जिससे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते और वो कैंसिल कर देते हैं. सर या तो जो ज़्यादा इनको जो इम्पोर्टेंट होता है जिनका ज़्यादा होता है वही लोग बुक करते हैं. अनलाइक अदर कंपनीज वी डोंट चार्ज हाई कमीशन फ्रॉम ड्राइवर. जो अदर कंपनी है वो जो उनसे हाई चार्ज डिमांड करते हैं. वी चार्ज स्मॉल फ्लैट फ्री अप एवरी राइड. मतलब हमारा जो चार्ज होगा एवरी राइड पे नॉर्मली बहुत छोटा होगा सर. दिस फॉरएवर वर ड्राइवर इन ज्वाइनिंग एंड हेल्प स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट. और जो ड्राइवर होंगे वो ज्वाइनिंग करके एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कंप्लीट है सर. नेक्स्ट पेज. Sanjeev sir, next page. We don't have any direct competitor in this marketplace because we are catering to untapped market for non-metro city and village. मतलब जो हमारे कंपटीटर है इस एरिया में मतलब नॉन मेट्रो सिटी और विलेज में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी स्टार्टअप नहीं है सर. We are category create provide into in solution from cab service in intercity travel and logistics. मतलब हम जो है एक इस मतलब जो यहाँ का मार्केट सर्विस और ट्रेवल प्लस लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट का भी सर्विस अवेलेबल करेंगे सर. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी लोकल टूरिस्ट एंड ट्रेवल एजेंट्स आर आवर इनडायरेक्ट कंपटीटर फॉर इंटरचेंज. मतलब जो लोकल है और ट्रेवल हमारे कोई भी अभी तक कंपटीशन नहीं है सर इसमें. Why is now best time in startup this company? हमें इस समय इस कंपनी की स्टार्टअप करने का एक बेस्ट समय मतलब अच्छा इंटरनेट पर increasing in the more non-metro cities and village rural India. Internet preference rate in compliance from the 4 in 2016 around 45% in 2000. मतलब जो हमारा जो इंटरनेट हम पहले यूज करते थे 2007 में वो ऑल ओवर नॉन मेट्रो सिटी और विलेज में 4% यूज करते थे लेकिन 2021 में ये 4% से हर साल 4% बढ़कर इस समय 45% यूज कर रहे हैं सर. इसलिए हमारे लिए एक चांस है इन सिटी में स्टार्ट करना. रूरल एरिया इन अनटेप्टेड मार्केट इन टाइम सर्विस. दिस विल आल्सो गिव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मतलब ये जो रूरल एरिया है अभी यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं आई है
न कोई ट्रेवल, न कोई ट्रांसपोर्ट, कैब, ऐसी कोई भी मतलब है तो मान ली छोटी मोटी कंपनी था, अभी तक ऐसा कोई भी आया ही नहीं है। तो इस एरिया में स्टार्ट करने का एक एडवांटेज है सर, ये हम स्टार्टअप है सर। गो टू मार्केट, सोशल मीडिया मार्केट विल बी हेल्प दी जनरेट लीड, मतलब हमारा जो मार्केट है वो हम कैप्चर कर करेंगे, कैसे कैप्चर करेंगे? सोशल मीडिया मार्केट विल बी हेल्प जनरेट लीड, मतलब हम सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हम मार्केट लीड जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट अप्रोचेड लाइक बैनर एंड टेम्पलेट मार्केट टू टारगेट नॉन मेट्रो सिटी एंड विलेज। और जो दूसरा ऑप्शन है, हम नॉन मेट्रो सिटी में टेम्पलेट, होर्डिंग, बैनर से भी हम ट्रेडिशनल मार्केट करके हम कंपनी का प्रमोट कर सकते हैं सर। पार्टनरशिप विद प्रोवाइड प्राइवेट बसेज, जो एक थर्ड है हमारे पास है, थर्ड है जो प्राइवेट बस है, उनसे हम पार्टनरशिप करके उनसे भी हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केट में मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हैं सर। उनके जैसे बस पे स्टिकर लगा के, होर्डिंग लगा, जो भी आता है वो सब करके सर। आवर रेवेन्यू प्रोजेक्शन सर, 2022-23 में कंपनी का जो रेवेन्यू है 11.7 करोड़ है सर। 2023 से 24 में ये 31 करोड़ है सर। 24 से 25 पर ये सर 24 से 25 2024 से 25 में सर ये 73.7 करोड़ है। 2025 से 2026 सर ये 165 करोड़ है सर। Unutilized of fund, the mention of fund are required for running in 24 months. अदर एक्सपेंस जो हमें चाहिए वो सर 5 लाख एक्सपेंस होगा। इस प्लेटफॉर्म में जो है 20 लाख एक्सपेंस होगा। ऑफिस कॉस्ट जो है वो 70 लाख जाएगा सर। मार्केटिंग में जो है फंड का वो 90 लाख जाएगा सर। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 1.4 करोड़ जाएगा सर। टोटल फंड जो हमें चाहिए 3.25 कंपनी का टोटल फंड चाहिए सर स्टार्टअप करने के लिए। Our team, sir. Akash Jaiswal, founder and CEO, sir. Thank you. Feel different contexts. Okay, sir. Thank you, sir. But कोई टेक्नोलॉजी तो है, हाउ इज इट बेस्ड ऑन I have few observations actually, Digvij, Akash. हाँ मिस्टर दुबंधु, प्लीज गो अहेड। In fact, part of it could not be heard, but whatever I could make out from the presentation, it's a valiant attempt on part of Akash to, to make a presentation regarding a possible alternative to the existing services available like Ola and Uber. But my suggestion to Akash that please try for a little smaller presentation, and in that presentation you please make out a case how your how your product is better than the existing products available in the market. How are you superior in terms of customer connect, in terms of technology? He has already in said he terms doesn't have competition at all, sir. No, ठीक है, but if it is not there, then it has to come out in the presentation. Technology is an important issue. What Mr. Rakesh is speaking It has to come out. The idea is excellent. I think we are all for encouraging young boys like you to come up with excellent ideas. But ideas are okay, no issue on that. But you need to be convincing as far as presentation is concerned. So therefore, my suggestion would be, if it is acceptable, you can go for a little smaller presentation and make out a case as to how your idea is better than, or how your product is better than the products already available in the market, and how you can have a cutting edge in the market vis-a-vis other products, and you can earn a name for yourself. Ideas can be very lofty, no doubt about that, but ultimately you have to make money to survive. Okay, Akash ji, you are able to hear me? जी सर। हाँ, थोड़ा मतलब उसको ऐसा बनाइए कि so that कि the idea comes out
very, very clearly. And the investors should be very keen to put money in your project. Okay, idea is very good. There's a lot of, I think, although I could not hear a part of it initially, idea is good. Only thing that you have to, I mean, make it more convincing. That's Vijay, it from my side. Vijay sir, Any more questions? Yeah, sorry. Vijay Salvia sir, any question? Mohit? Yes, yes. Yeah, yeah. Please go ahead, sir. Actually, there was a network problem, so I could not understand whole thing, but only मुझे इतना समझ आया कि कुछ आपका ट्रैवल से संबंधित कोई बिजनेस है का प्लान है कुछ, तो मुझे बस एक लाइन में बताएं, दो लाइन में कि क्या बिजनेस है, और तो और साथ फिर मैं उसके पीछे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ बिजनेस प्लान से रिलेटेड, क्या करना चाहते हैं मुझे एक बार दो लाइन में बता दीजिए। जी सर। सर हमारा जो बिजनेस है वो नॉन मेट्रो सिटी और विलेज में कैरेज बल्क पॉइंट सिटी और जो भी बड़ी सिटी जैसे ओला उबर है, वैसे हमारे स्टार्टअप है नॉन मेट्रो, छोटे छोटे शहर जैसे बड़े शहर में सर्विस मिल रहा है वैसे छोटे शहर में भी सर्विस में है। छोटे आवाज क्लियर नहीं है, आवाज बीच में कट जाती है। I will summarize Vijay for you. Basically, what he's doing is he's trying to create services like Ola and Uber in smaller cities and villages. And secondly, जो Ola and Uber के problems हैं, जैसे वो एक्सपेंसिव हैं, ड्राइवर्स को कम कमीशन देते हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं कैंसलेशन राइड के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हम एक फ्लैट स्ट्रक्चर रखेंगे जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा कैंसलेशन चार्ज नहीं करेंगे, और वी विल बी जो करंट पेन है इनका ओला और उबर से, जिससे कि ड्राइवर भी थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि उनको कम पैसा हाथ में आता है, और जो उसमें ट्रैवल करता है उसको भी बहुत पैसा लगाना पड़ता है, वो हम कम कर देंगे। और हम सेफ भी बहुत हैं क्योंकि हम विमेन के लिए सेफ है, एल्डरली के लिए सेफ है, ये सब उन्होंने बताया था स्लाइड में। सो कहने का ये मतलब है कि वो नॉट ओनली ओला और उबर की तरह सर्विस विलेजेस में प्रोवाइड करेंगे, उनके अलावा जो करंट पेन एरियाज हैं जिसकी वजह से ड्राइवर और पैसेंजर दोनों नाखुश रहते हैं, वो जो पेन एरियाज है वो भी हम रिमूव कर देंगे थ्रू आवर ऑफरिंग। दैट्स व्हाट इज से। अब इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि शुरुआत में आप कहाँ से करेंगे, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, हाउ मेनी cars you want, how many cars you will be, means old cars is possible, and with the old cars how it is possible, means 10 years old may be possible, like that. So please clarify the picture ki these requirements we want for whatever the resources जो यूज होते हैं इसमें, तो और उसके लिए फिर उनको आप क्या बेनिफिट दोगे, आप या खुद कार खरीद रहे हैं, खुद की कार रहेगी, और फिर विलेजेस की बात है, देखिए इट इज द टॉकिंग अबाउट द विलेजेस, तो कॉस्ट चीपनेस है ना, एंड अभी तो क्या है कि वो गांव के लोग जो विलेजेस के लोग हैं वो तो बस में भी चले जाते हैं, 25 सीटर की बस में 125 लोग बैठ जाते हैं, तो हाउ यू बीट सच टाइप ऑफ कंपटीशन है ना, और कई तरीके की चीजें हैं, एक बाइक पे 4 लोग चले जाते हैं, 5 लोग चले जाते हैं, तो अब आप मुझे ये बताएं कि वहाँ ओला उबेर जैसा कंसेप्ट, मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा, बहुत अच्छी कंसेप्ट है और चल जाएगा ये है, बस हमें इसको थोड़ा सा प्रमोटिव बनाना है, और प्रमोटिव बनाने के लिए आप मुझे ये सब चीजें समझाएं कि ये बेसिक चीजें, क्योंकि खर्चा सबसे ज्यादा यही लग रहा है, और जो बॉडी चाहिए वहाँ पे कार वो बहुत अच्छी हैवी बॉडी चाहिए हमें,
क्योंकि सबकी रोड अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करें और मुझे बताएं, उसके बाद तो फिर चल जाएगा ये। आकाश जी, उन्होंने सर सवाल, जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे मतलब काफी लोग जो है अब तो आपने इसको सर जो नॉन मेट्रो सिटी जो छोटे छोटे गांव है आप बोलना वहाँ पे लगभग आकाश, एक बात है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट कहीं पर शुरू किए हैं, कहीं पर? सर शुरू नहीं किए हैं, अभी इस पे वर्क चल रहा है सर, शुरुआत हो चुका है, मतलब जो भी काम है डाटा मार्केट से निकाल रहे हैं, गाड़ी वालों को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं कहीं पर थोड़ा मतलब, अभी सर ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है सर। हाँ नहीं ठीक है, अभी असल में इसको कहीं पर थोड़ा इम्प्लीमेंट किए हैं, कोई छोटा मोटा शहर में उसको प्रोटोटाइप की तरह इम्प्लीमेंट करके थोड़ा टेस्ट किए हैं, मार्केट टेस्ट किए हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर रेस्पॉन्स, कंज्यूमर कनेक्ट, इसको थोड़ा टेस्ट किए हैं। अभी तक भी टेस्ट नहीं किया है, नहीं सर अभी टेस्ट नहीं किए हैं इस प्रोडक्ट को, लेकिन ऑलरेडी जो टेस्ट करने के स्टेज पे आ चुका है, अभी टेस्ट भी होने हाँ वाला ना, है ये थोड़ा कर लेना ही अच्छा है। इसी मंथ के एंड तक या अगले मंथ तक ये हाँ, टेस्ट। ये थोड़ा टेस्ट कर लेना अच्छा है, कंसेप्ट। और सर आप पूछ रहे हैं कि 25 सीटर बस पे जी सर उन्होंने विजय सालविया सर का क्वेश्चन का सर रिस्पांस दे रहे हैं। सर जो छोटे छोटे शहर में है लोग गाड़ी फाइनेंस लेते हैं सर। हेलो विजय सर। हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो सर आप पूछ रहे थे छोटे छोटे शहर में है, अब ये काम पे कैसे चलेगा? 25 सीटर बस पे जो 4 लोग 5 लोग बैठ जाते हैं, मतलब 25 सीटर बस में 125 लोग बैठ जाते हैं सर। लेकिन ये देखिए जिनके यहाँ शादी होती है, शादियों में लोग जो है कि मान लीजिए वो एडजस्ट नहीं कर पाते सर, जैसे वो उनको मतलब आज का कॉन्सेप्ट है हमारी शादी में लोग पैसे नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि हमारा जो शादी हो कितना धूमधाम से हो सके। वहाँ पे 25 सीटर 125 सीटर नहीं देखते, वो एक गाड़ी में अगर 8 सीटर गाड़ी तो उसमें 4 ही लोग बैठ के जाते हैं। सो विजय जी, मतलब ये किसी को इमरजेंसी हो कहीं जाना हुआ, ओला ऊबर जब कोई तभी बुकिंग करता है जब उसको इमरजेंसी होता है सर, कहीं जाना हो या अपनी गाड़ी ना हो। गाँव में भी ऐसा होता है, किसी को कहीं जाना हुआ या कहीं किसी को मान लीजिए विदाई कराने जाना हुआ, किसी को कहीं मतलब दवा लेने जाना हुआ, किसी को कहीं और किसी का दर्शन करने जाना हुआ, ऐसे गाँव में सर ऐसे काम पड़ते हैं सर। किसी को माल भेजना हुआ, जैसे कोई दुकानदार है मतलब 20-25 बोरी कहीं माल भेजना है। So Vijay ji, what he is saying is that there is category of market in village. शादी हो गई जिसमें आप थोड़ा इज्जत रखने के लिए बड़ी गाड़ी लेंगे और 4 लोग बिठाएंगे, एक ये मार्केट हो गया। फिर किसी को एम्बुलेंस चाहिए या मतलब हॉस्पिटल जाना है तो उसमें आप 125 तो नहीं बिठा सकते, तो ये एक मार्केट हो गया। फिर इन्होंने बोला जैसे तीसरा क्या बताया था तुमने आकाश? सामान भेजना है, थोड़ा सामान भेजना है कहीं वगैरह वगैरह, तो देर इज मार्केट फॉर इट। नहीं, मार्केट तो है असल में। आइडिया में, आकाश का आइडिया में तो दम है, आकाश का आइडिया में दम है, इसको वन ये सेकेंड, बढ़िया हो सकता है। हाँ विजय, मुझे वो बताया कि जो कार्स वगैरह है, जो जो ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिक जो चीज है, वो आपको किस टाइप की अवेलेबिलिटी चाहिए? आप इसमें किस टाइप के कार्स को यूज करेंगे? जीप, बोलेरो, किस टाइप का व्हीकल यूज करेंगे? विजय जी, मैं इनके बिहाफ में बोलता हूँ। आकाश आप ऐड कर देना अगर आपको ऐड करना होगा तो। एक्चुअली विलेज में ना, आई डोंट नो बट आई बिलीव दैट वहाँ काफी लिबरल है, लाइफस्टाइल काफी लिबरल होता है। जैसे हमारे यहाँ 15 साल हो गया किसी व्हीकल का तो यू आर एक्चुअली स्ट्रिक्टली कैन नॉट ड्राइव, लेकिन विलेज में पीपल ड्राइव। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट he might have a cost arbitrage if he uses a lot of second-hand vehicles or vehicles that have been, that are उनकी मेंटेनेंस एक्चुअली आई डोंट नो। अभी मेरे को भी थोड़ा सा समझाते समझाते डाउट हो गया कि अगर वो पुरानी है तो कॉस्ट तो कम रहेगा उसको एक्वायर करने के लिए, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट शायद ज़्यादा आ जाए बिकॉज ऑफ द रोड्स ऑल्सो। आई एम सॉरी। सो मैं ना ये आपका क्वेश्चन जो है विजय जी डायरेक्टली आकाश को दे देता हूँ। आकाश आपकी टर्न है। मेरा भी एक क्वेश्चन है संजीव, ये
अभी टेक्नोलॉजी का कनेक्टिविटी जो टेक्नोलॉजी है वो रूरल एरियाज में कनेक्ट कैसे होगी, यू नो हाउ विल प्रोलिफरेट जो इनकी टेक्नोलॉजी है. अभी तक अगर उबर ओला नहीं हुई है तो हाउ विल यू नो ही थिंक्स हिज टेक्नोलॉजी विल प्रोलिफरेट इन द विलेजेस. सो आकाश, तुम्हारे लिए दो क्वेश्चन है. एक तो विजय जी का है कि तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा रहेगा, वही सवाल है मेरे ख्याल से, रोड भी खराब होते हैं. और दूसरा, दिग्विजय सर कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वो इतनी उत्कर्ष नहीं है विलेजेस में. तो मेरा उनका सवाल ये है कि जब ओला और उबर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे करोगे. ये दो सवाल आपके लिए हैं. जी सर. सर अब फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल दे रहे हैं कि हम गांव में कैसे मतलब सर्विस मतलब कैसे एक्सपेंड करेंगे जो खर्चे हैं सर. सर अब ये जानिए कि हर गांव में मतलब एक सिटी के हर गांव में 8 से 10 गाड़ी रजिस्टर्ड है सर. आप आरटीओ से उठा के देखेंगे डाटा, तो एक सिटी में 2 से 2.5 लाख गाड़ी अवेलेबल है सर, जो रजिस्टर्ड गाड़ी है. 4 व्हीलर है, जैसे मान लीजिए बोलोरो हुआ, स्कॉर्पियो हुआ, यहाँ तक कि गांव में फॉर्चुनर भी आ गए सर, BMW तक चल रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं सर, सिर्फ सर बड़े बड़े शहर में, गाँव में भी सर लोग ला के आ रहे हैं, अफसर लेके आ रहे हैं, 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30-35 लाख का गाड़ी ले रहे हैं. हर गाँव में एक दो आपको हर गाँव में हर 5 गाँव में आपको एक फॉर्चुनर मिल जाएगा सर, स्कॉर्पियो मिल जाएगा, बोलेरो मिल जाएगा. और इनकी जो है मतलब इनका मतलब जो है कॉस्ट हर साल लगने सर. इनको हर साल इंश्योरेंस देना है, फिटनेस देना है, रोड टैक्स देना है, उसके बाद अगर गाड़ी फाइनेंस है तो उसका मतलब किस्त भी देना है हर साल का. लेकिन इनके पास ये खर्चे कहाँ से आएंगे सर. ये भी चाहते जो हमारे पास गाड़ी है उसका कुछ इनकम हो सर. कितने लोग होते हैं गाड़ी फाइनेंस लेते हैं प्लस उनका इनकम नहीं हो पाता, तो सर वो लास्ट में क्या होता है, या तो फाइनेंस वाले गाड़ी उठा ले जाते हैं, या तो वो गाड़ी मतलब उनको बेचना पड़ता है सेकंड हैंड में, क्योंकि उनके पास कोई इनकम होता ही नहीं सर. अगर हम उनको एक सर्विस देंगे, हमारा काम क्या है बस पर और जो है गाड़ी ऑनर को कांटेक्ट कनेक्ट करना, गाड़ी की अपने ऐप पे चलाना है और कस्टमर को उसकी सर्विस देना है सर. और सर्विस इतना क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सर. न ड्राइवर कैंसिल कर चुके, जिनके पास गाड़ियां हैं हर गांव में बहुत सी गाड़ियां जिनकी नहीं चलती सर, हमें उनको हायर करना है. अगर इस हिसाब से हायर करते हैं तो हम एक साल में मानते हैं कि एक साल में 1 से 1.5 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है सर. 1 लाख हम मानते हैं, उसका अगर 10% हम हायर करते हैं तो उसका हम 10,000 गाड़ी हायर किए सर. 10,000 की गाड़ी अगर 5% भी रन करेगा तो भी सर 500 गाड़ी रन होगा डेली. अब रन कैसे करेगा हम बताएं सर. एक शहर में लगभग 2,500 से 3,000 विलेज होते हैं सर, और 2,500 से 3,000 विलेज मतलब डेली का अगर 500 गाड़ी का 2,500 से 3,000 विलेज में 500 गाड़ी नहीं रन करेगा सर. नॉर्मली 500 गाड़ी रन करेगा, इसमें कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं सर. और बाकी जो गाड़ी का जो कॉस्ट है, मतलब जैसे ओयो है, ओयो क्या करता है, मान लीजिए जोमेटो और करता है सर, छोटे छोटे शहर में भी अब आ गए सर. घर में बैठे तो यूज कर रहे थे ना, मंगा रहे हैं भाई, होटल है यही जौनपुर और बनारस यहाँ और गोरखपुर, छोटे छोटे शहर, यहाँ पे भी जोमेटो आ गया है. वो क्या करते हैं बस उनकी सर्विस है, ऑलरेडी ऑनर का है सर. हमारे भी क्या काम है कि जो कार ऑनर है उनसे गाड़ी हायर करना है, हमें गाड़ी परचेज खरीदना नहीं. ऑलरेडी मार्केट में इतनी गाड़ियां हैं कि हमें परचेज करने की जरूरत ही नहीं है सर. उनसे हायर करना है, उनको मतलब वो मतलब उनकी गाड़ी को थोड़ा और मॉडल करके उसको मार्केट में जो है प्रेजेंट करना है कस्टमर को, जिससे कस्टमर को पसंद आए और उसमें ड्राइवर का भी इनकम, ड्राइवर को भी प्रॉफिट हो और कार ओनर को भी प्रॉफिट हो और कंपनी को भी प्रॉफिट हो सर.